Good afternoon, everyone. We will be starting our program shortly. Before we start the program, I would like to highlight today's program. Invite dignitaries on the dais. After that, we have welcome address. Welcome address will be given by Dr. Kadam Ibotombi Singh, Gas Faculty, Department of Sociology, Manipur University. After that, we have keynote address to be given by Dr. Hai Sukadev Sharma, author of the book, Department of Social Work. A warm good afternoon to all the respected dignitaries, guests, delegates, and invitees. With great joy and immense exultation. It is my pleasure to welcome everyone present here today at the Rajasri Bagachandra Skill Development Center, Harau Road, Imphal East, at the book release function of the book entitled Unsung Anglo-Manipuri War Heroes at Kalapani, written by Sukadev Sharma Hanjabam and Ahibam Koreng Singh, being published by National Book Trust, Government of India, being organized by Intellectual Forum of Northeast Manipur Chapter. I, Dr. Ketramayam Chitrabanu, on behalf of the organizing committee, felt honored to have with us the Honorable Chief Guest of today's function, who hardly need any introduction. Param Pujaniya Dr. Mohanji Vagabot, Sarsanghchalak Rastriya Swayamsevak Singh, a very special welcome to our respected chief guests. And I also feel privileged to extend my warm welcome to Maharaja Lishimba Sanazoba, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha Manipur, and also the President of today's function. May I request all the delegates to give a big round of applause to welcome our today's distinguished guests, please. Thank you. And may I request all the phone to keep in a silent mode or in the switch off mode. Thank you. May I request Dr. Kadam Ibotombi Singh, Gas Faculty, Department of Sociology, Manipur University, to give the welcome address, please. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांसते सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम् भक्तिं लभते परम्. In the Bhagavad Gita, chapter number 18, 54 verse, Krishna says to Arjuna, one situated in the transcendental Brahma realization becomes mentally serene, neither grieving nor desiring, being equitably disposed toward all living beings. Such a yogi attains
supreme devotion unto me. So with this auspicious invocation from Bhagavad Gita, I, Padam Ibotombi Singh, on behalf of the organizing committee of this August gathering of book release function, warmly welcome our respected chief guest of this function, Pujaniya Dr. Mohanji Bhagwat, Sarsanghchalak, RSS, and Honorable President of this function, His Royal Highness Maharaj Laisemba Sanajauba, present Honorable Member of Parliament Rajya Sabha, Manipur, respected scholars, teachers, colleagues, and friends. The organizing committee of Intellectual Forum of Northeast is truly privileged with the precious moments of valuable presence of our chief guest and president of the function today. We again welcome all who are assembled here to grace this function and are ready to be tolerant for participating in this simple event of book releasing function by sparing your valuable time and compromising your busy schedules. I believe that the readers of today's releasing book, Unsung Anglo-Manipuri War Heroes at Kalapani, edited by Sukadeva Sharma Hanjabam and Ahibam Koireng, would surely find an appropriate kind of place in the text and context of academic discourse about these less sung themes. So with these few words, I again welcome those who are the descendants of the unsung heroes and also those who have committed to compile this valuable piece of work for your kind presence and attention. Thank you so much. Thank you so much. Now we have keynote address by Dr. S. Sukadev Sharma, author, Department of Social Work, Indira Gandhi National Travel University, Regional Campus, Manipur. Please. Param Pujaniya Dr. Mohanji Bhagwat, Sarsanghchalak, Rashtriya Swayamsevak Sangh, Iningthau Laisemba Sanajauba, Honorable MP, Rajya Sabha, Manipur, descendant of our heroes deported at Kalapani, Kahalaman, Mayampuna Pukkurumjari. The book is an outcome of a continuous campaign by many people and organizations connected by the interest to keep the sacrifice alive. To name a few, All Manipur Working Journalists Union, Preservation Committee for Deported War Heroes, United Chongthas, IFNI, Manipur University, descendant families, and many individuals. The 23rd November observation since 2020, initiated as part of the campaign, brings the organizations and individuals under a platform. We are happy that the center and the state government started taking significant initiative. We don't claim that it is because of our campaign, but we are pleased that our campaign is moving in the right direction. The book shares the incomplete stories of our war heroes even after 130 years of deportation. It is so incomplete that even after significant government initiative, we cannot trace most of the descendants of the war heroes.
when the government planned to install a memorial complex with incomplete names, our campaign, with the help of our like-minded media fraternity, notably columnists, editors, managed to influence the decision by providing concrete evidence and the correct names and number. Now, the public sees the proper name and number at the Kalapani Memorial Complex at Imphal. The book also shares the belief of Sanatan Dharma. Let me cite two significant instances. Number one, when the heroes were interned at Mount Manipur, earlier it is called Mount Heret, our heroes protested the food provided by the colonizers, as the culture of food is very different. So the heroes cooked their own food and continued to survive with our Vaishnavite culture even in difficult times. Second instance, when the Maharaja and the high-ranking officials were not allowed to return home and die in the land of Sri Sri Govindaji, many of them, including Maharaja, raised at Radhakunda. The belief and tradition of pilgrimage console their heart and mind to die peacefully. Being a devout Vaishnav, Navadip, Radhakunda, Vrindavan is a sacred pilgrimage destination for our people and the Maharajas of Manipur. Maharaja Bhaigachandra, who conceived Ras Lila, Nat Sankirtana, died at Navadip. And this continues till Maharaj Churachan, who died at Radhakunda. Unfortunately, the Samadhi of Maharaja Kulachandra at Radhakunda is not accessible to the public. The government should intervene to preserve and promote the heritage. The book concludes with two things. We need to develop a comprehensive report. Like Indian Council of Historical Research, they have come up with a book called Dictionary of Martyrs. Similarly, for the deported war heroes at Kalapani, for the Northeast India and Manipur, I emphasize the Northeast simply because we don't have the documentation and also the information are very weak. So even with the 23 war heroes we have, the information of life after or what happened at Kalapani, we don't have the information. Similarly, the government also does not have the information. The second thing we propose, 23rd November, as 15 of our heroes, including Maharaja, reached Kalapani on 23rd November 1891. So since 2020, we initiated the observation. Lastly, we thank everyone who supported us intellectually with information, with moral support to complete the book. We wish to tell a complete story for our unsung war heroes. Thank you. Thank you. Now we have felicitation of the dignitaries. May I request Dr. Ahibam Koiring Singh, author and IQSC Manipur University, to felicitate the chief guest of today's function, Param Pujaniya Dr. Mohan J. Bhagawat. Please. Thank you. Now, may I request Dr. Jemper Kamai, Department of Botany, Modern College, Imphal, to felicitate the president of today's function, Maharaja Lishim Basanazop, please.
Thank you. Now we have introduction of the descendants of the Unsung Anglo-Manipuri war heroes. We have 8 descendants with us today. The descendants are requested to kindly raise or stand when you are being introduced. Chongtham Gopal Krishna Singh, Khwaila Lambung Makong, Imphal West, descendant of Major Chongthamia, commander of Manipuri troops at the Battle of Khongjom. Next we have Chongtham Tomba Singh, Khwai Nagamapal Singh Jubam Lerek, Imphal West, descendant of Major Chongthamia, commander of Manipuri troops at the Battle of Khongjom. Next we have Asangbam Jagjit Singh, Uripok Cherapkot Maning, Imphal West, descendant of Asangbam Furahongba allies Asangbakut. Next we have Ingudam Indramani Singh of Lamsang Afaiba, Imphal West, descendant of Jamadar Ingudam Ganesh Singh. Next we have Usham Samanand Singh, Thangmaiban, Imphal West, descendant of Lalup Chingba Usam Aru Singh. Next we have Usham Bihari Singh of Thangmaiban, Imphal West, descendant of Lalup Chingba Usam Aru Singh. Next we have Chongtham Ibocha Singh of Singzamai Chongtham Laikai, is a descendant of Chongtham Nilamani Singh Ayapural Major. The last but not the least, we have Sagolsem Achoba Maite of Singjamai Kongnang Faidekpi, descendant of Sagolsem Dhanaj Singh. May I request the chief guest of today's function, Param Pujaniya, Dr. Mohan J. Vagabat, to felicitate the descendants of Unsung Anglo-Manipuri war heroes at Kalapani. First, I call Chongtham Gopal. Okay. Chongtham Gopal Krishna Singh of Khwai Lalambung Makong, Imphal West. Chongtham Gopal Krishna Singh is the descendant of Major Chongthamia, commander of Manipuri troops at the Battle of Khongjom. Next, I call Chongtham Tomba Singh of Khwai Nagamapal Singh Jubam Lera. He is the descendant of Major Chongthamia, commander of Manipuri troops at the Battle of Khongjom. Next, we have Asambam Jagijit Singh of Uripok Cherapkot Maning, Imphal West. Asambam Jagijit Singh is the descendant of Asangbam Furahongba allies Asangbam Kut. Now we have Ingudam Indramani Singh of Lamsang Afaiba, Imphal West. Ingudam Indramani is a descendant of Jamadar Ingudam Ganesh Singh. Now we have Usham Shamanand Singh of Thangmaiban, Imphal West. He is a descendant of Lalup Chingba Usam Aru Singh. Next, we have Usham Bihari Singh of Imphal West. He is also the descendant of Lalup Chingba Usam Aru Singh.
Next, we have Chongtham Ibocha Singh of Singzamai Chongtham Lekai. He is the descendant of Chongtham Nilamanish Singh, Ayapural Major. Next, we have Sagolchim Achoba Meitei of Singzamai Kongnang Faidekpi. He is the descendant of Sagolsim Dhanash Singh. Next, we have a group session with the descendants and the Honorable Chief Guest and President of today's function. Yeah. बाद में ओके ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you, sir. Now the time has arrived for the release of the book entitled Unsung Anglo-Manipuri War Heroes at Kalapani. So now may I request the chief guest of today's function, Param Pujaniya Dr. Muhammad G. Bhagavat, and president of today's function, Maharaja Leshem Bachanazaba, for the release of the book. May I request all the delegates to give a big round of applause. Thank you so much. Now, may I request our distinguished chief guest of today's function, Param Pujaniya Dr. Mohan G. Bhagavat, to address the gathering. Sir, please. आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आदरणीय महाराजा श्रीमान सांजाओबा जी, सभी स्वातंत्र्य वीरों के वंशधर यहाँ जो उपस्थित है और उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, हमारे लिए यानी हम मणिपुर वासियों के लिए और सब भारतवासियों के लिए ये बड़ा गौरव का विषय है कि स्वतंत्रता के लिए जिन वीरों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, स्वतंत्रता के 75 साल पूर्ण होने पर हम उनको स्मरण कर रहे, इतना ही नहीं तो उनके बारे में जानकारी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति को उसके पिताजी की, दादाजी की इस्टेट मिल गई, उसने स्वयं कुछ नहीं किया, इस्टेट मिल गई, तो उस इस्टेट की वैल्यू क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये उसके समझ में तब आता है जब उसके पिताजी ने, दादाजी ने वो इस्टेट प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम किया, ये उसको मालूम होता है। हमको स्वतंत्रता मिली 75 वर्ष हुए, अब तो स्वतंत्रता के बाद जन्मी हुई जनरेशन अपने देश में है।
तो उनको पता ही नहीं कि आज हम जिस स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं उसको पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया, उनको कितना करना पड़ा, कितना कुछ त्याग बलिदान देना पड़ा। इतना त्याग बलिदान करने की ताकत हमारे पूर्वजों की थी, उनका ही खून हमारे नसों में बह रहा है। तो हम भी उतना ही त्याग बलिदान करते हुए अपने देश को बड़ा कर सकते हैं, अपने जीवन को वास्तविक स्वतंत्र और सुखी जीवन बना सकते हैं। ये आत्मविश्वास इस स्मरण में से प्राप्त होता है। ये भी पता चलता है कि हमारा ये जो कुल है भारतवंशियों का, मणिपुर का जैसे है वैसे सारे भारत में हुआ है ये संघर्ष। कभी कभी बताया जाता है कि ये संघर्ष केवल कहीं पर उधर नॉर्थ इंडिया में हो, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष केवल 1857 में हुआ ऐसा भी नहीं, उसके पहले से शुरू हुआ है और 1947 तक कंटिन्यूअस चला है। थोड़ा थोड़ा सुलगने लगा, फुल फ्लेयर उसका 1857 के आसपास आया, बाद में वो बुझा नहीं, वो चलते रहा। तो केरल में 1830 में वीर पांड्य कट्टबोमन ने संघर्ष शुरू किया। उसने एक प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया, और प्रोक्लेमेशन सारे भारत के लिए पब्लिश किया, और उसमें ये कहा कि ये जो गोरे लोग आए हैं बाहर से, इनके आने के कारण खाने में नमक और पूजा में कर्पूर महंगा हो जाएगा, इसलिए इनको हका लो अभी। देखिए, बाहर से आया है, हम पर राज नहीं करना चाहिए, वी कैन रूल आवरसेल्व्स, एक स्वतंत्रता की भावना है। और स्वतंत्रता का डेफिनेशन भी है, खाने में नमक, फिजिकल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, और पूजा में कर्पूर, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी और इंडिपेंडेंस। जो अभी बताया कि नोट में कि अपने धर्म का पालन करते हुए हमारे वीर रहे। तो ये जो सारा संघर्ष हुआ है 1857 के पहले से 1947 तक, उसमें भारत का संघर्ष कैसे हुआ, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये मणिपुर का संघर्ष है। ये जो दो, इसमें मेनली 1891 उसके बारे में, उसके पहले भी एक बार हुआ है, दोनों का उल्लेख है। लेकिन 1891 के हमारे हीरोज, हमारे योद्धा और स्वातंत्र्य योद्धा थे, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, मणिपुर राज्य के अधिकारों के लिए और मणिपुर के लोगों के सुख के लिए लड़ रहे थे, वैसे ही अपने धर्म के लिए भी लड़ रहे थे। लड़ाई के पहले वो जैसे रहे, जब लड़ाई नहीं थी तब अंग्रेजों से जैसा व्यवहार किया, जिस कारण से लड़ाई बनी उस कारण को जैसा उन्होंने समझा, लड़ाई के समय उनका जैसा व्यवहार रहा, वीरता का, दुष्टता का नहीं रहा, पशुता का नहीं रहा, वीरता का रहा। और अंग्रेजों का रिकॉर्ड लिखता है कि इंग्लैंड में इस युद्ध को लेकर जो पार्लियामेंट में विवाद हुआ, उस विवाद का एक कारण ये था कि अंग्रेजों की फौज के पलटनों ने अनसोल्जरली कंडक्ट दिखाया। हमारे वीरों ने थोड़े होते हुए भी अनसोल्जरली कंडक्ट नहीं दिखाया, और युद्ध में विजय प्राप्त होती है, पराजय भी प्राप्त होता है। तो जैसे गीता कहती है, सुख दुखम समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, वैसे उस युद्ध में पराजित होने के बाद भी यहां जब जेल में थे, जब ट्रायल चला, जब पनिशमेंट्स डिक्लेयर हुई, बाद में बहुत लोगों की पनिशमेंट मीट आउट हुई। 4 लोगों को तो फांसी दे ही दिया, 5 लोगों को, बाकी लोगों का थोड़ा कम हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कालापानी भेजा गया। वहाँ पूरे इसमें जो कंडक्ट रहा
और वापस आने के बाद का कंडक्ट रहा। डिटेल तो नहीं है, लेकिन जो इंडिकेशन मिलता है अवेलेबल इंफॉर्मेशन से, वो इंडिकेशन कहता है कि हमारे लोगों का व्यवहार पूर्णतः हमारी धर्म संस्कृति परंपरा के अनुकूल था, वेरी डिग्निफाइड था, मनुष्य के जैसा, स्वाभिमानी मनुष्य के जैसा था। तो उस परिस्थिति में भी उन्होंने अपना आचरण नहीं छोड़ा, अपने तत्व की भूमिका पर स्थिर रहे। उसके फलस्वरूप मृत्यु मिला तो मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया। कालापानी जाना था, कालापानी गए, वापस आए, यहां आने नहीं दिया, कुछ कर नहीं सकते थे, शक्ति नहीं थी, तो वृंदावन में रहे, राधा कुंड में रहे। त्रिपुरा में एक बाद में वापस आ गए, वहां उनका एक नदी के किनारे अंत्य संस्कार हुआ, लेकिन खबर यहां देर से आई तो यहां के विधि के अनुसार उनका एक पलाश वृक्ष की ब्रांच रखकर उसका अंत्य संस्कार हुआ, ऐसा वर्णन मिलता है। तो हम लोग केवल, हमको बाहर का कोई नहीं चाहिए, केवल इतना नहीं, हमारा अपना कुछ है, उसके प्रिजर्वेशन के लिए हम लड़े। स्वतंत्रता हमारी केवल तंत्र को लेकर बात नहीं थी, स्व को लेकर भी बात थी। हम भारत के लोग हैं, भारत के हर प्रांत के, हर भाषा के, हर जाति के लोगों का एक स्व है जो हम सबको जोड़ता है। तो भारत का व्यक्ति सेक्युलर अलग और रिलीजियस अलग ऐसा नहीं होता है, वो धार्मिक होता है। सब कुछ शाश्वत तत्वों के आधार पर चलता है। भौतिक जीवन भी श्रद्धा के आधार पर चलता है, धर्म के आधार पर चलता है। वैसा ही व्यवहार हमारे सब लोगों का रहा और बड़ा वीरतापूर्ण व्यवहार रहा। पार्लियामेंट में जो हंगामा हुआ इंग्लैंड के, उसका एक कारण ये भी बताया गया है, ये वहाँ छपा है, वहाँ के रिपोर्ट्स में आया है, वो इसमें भी, पुस्तक में भी है। उसका एक कारण ये भी बताया गया है कि देशी लोगों की छोटी फौज ने, जिनके पास, अंग्रेजों के पास जैसे हथियार थे वैसे हथियार नहीं थे, वैसी तोपें नहीं थी, चारों तरफ से घिर गए थे, संख्या में बहुत कम थे, फिर भी जिस पराक्रम के साथ उनका सामना किया, तो कॉन्फिडेंस में भी कमी आई अंग्रेजों की। तो उन्हें कैसा पराक्रम दिखाया होगा, आप कल्पना कीजिए। ऐसे पराक्रमी पूर्वजों के हम वंशज हैं। हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते, अपने शहीदों को, हुतात्माओं को स्मरण करते, तो हमारी कृतज्ञता तो प्रकट होती ही है और होनी ही चाहिए। अपने आप पर एक शब्द है श्राद्ध, धर्म विधि है। श्राद्ध है श्रद्धा को प्रकट करना, श्रद्धा पूर्वक करना। हमारी, हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि वो श्रद्धास्पद जीवन के धनी लोग हैं। मैं महाराष्ट्र से आया हूं, मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट भी नहीं हूं, मणिपुरी भाषा नहीं जानता, मणिपुर में 8-10 बार आया हूं, बस इतना ही है। लेकिन यह पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे भी मन में उन शहीदों के प्रति एक श्रद्धा का, गौरव का अनुभव होता है। और ऐसा मणिपुर भारत में है, इसलिए भारत का भी संबंध उनसे है, इसका आनंद होता है। यह हमारी उनके प्रति श्रद्धा है। उस श्रद्धा के चलते हम उनका स्मरण करते, ये बात तो ठीक ही है, लेकिन उनका जीवन, उनका परिश्रम, उनका युद्ध, उनका त्याग, उनका बलिदान, ये हम सब लोगों को आज हमने कैसा जीना चाहिए, इसका पथ प्रदर्शन करता है। हमको वैसा ही जीना है, इन्हें हाथ में हथियार लेके किसी से लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन वैसा ही स्वाभिमान हमारा होना चाहिए। अगर हमारे स्व को, हमारे स्वतंत्रता को, हमारे धर्म को, संस्कृति को कोई हाथ में ऐसे साधन लेकर डराता है, तो उसके प्रतिकार में हमारा शौर्य वैसा ही होना चाहिए। हमारे मन में भय नहीं होना चाहिए।
संख्या भले ही हमारी थोड़ी हो या ज्यादा हो, हमारा त्याग बलिदान वैसा ही होना चाहिए। और ऐसा सब करते समय हमारे उन पूर्वजों का कैसा मन था, वो आप कंडक्ट जितना उपलब्ध है उतनी जानकारी भी देखेंगे, आपको ध्यान में आएगा कि इन सब बातों के लिए अंग्रेजों से उन्हें लड़ाई की, शरण नहीं गए, टूट गए लेकिन झुके नहीं। लेकिन उनके मन में द्वेष नहीं था, उनके मन में शत्रुता नहीं थी। गीता का ही जो वचन है, युद्धस्व विगत ज्वरा, ऐसे उन्होंने लड़ाई की। हम भी विगत ज्वर होकर ठंडे दिमाग से परिस्थिति का पूर्ण आकलन करते हुए अपने जीवन में उसी प्रकार के त्याग को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार की निर्भयता को प्रकट करते हैं, शौर्य पराक्रम को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार के एक डिग्निफाइड व्यवहार को प्रकट करते हैं, अपने देश धर्म के प्रति उसी प्रकार आत्मीयता को प्रकट करते हैं। तो हम हमारे देश को हमारे पूर्वजों के कारण, उनके त्याग बलिदान के कारण स्वतंत्रता मिली। उनसे पाठ पढ़कर उनका अनुसरण करते हुए हम लोग ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो हम अपने देश को विश्वगुरु बनाएंगे। ये संकल्प हमने करना चाहिए। 75 वर्ष हमारी स्वतंत्रता को हो गए। हमारे साथ इस्राएल भी स्वतंत्र हुआ, हमारे साथ जापान भी दूसरे महायुद्ध से मुक्त होकर आगे चला, हमारे साथ चीन भी चला। 1948 के ये सब लोग आए। इस्राएल क्या था? रेगिस्तान, कुछ होता नहीं था। इस्राएल में जो लोग आए थे, इस्राएल बनाने वाले, वो सब अपना घर बार स्टेट छोड़कर दूर से वहां आके बैठे थे। उनके पास सेना नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। रेगिस्तान में खेती करनी थी। और जिस दिन उन्होंने अपने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया, घोषणा की, उस क्षण 8 देशों ने उन पर हमला किया और आगे 30 साल उनको 5 लड़ाइयां लड़नी पड़ी। फिर भी आज वो कहां है? रेगिस्तान का नंदनवन बन गया है। सारी दुनिया में उनके सामर्थ्य की धाक है। मिलिटरीली भी बड़ा स्ट्रांग इस्राएल बना है। तो सब प्रकार से एक वैभव संपन्न राष्ट्र का उन्होंने निर्माण किया। जापान भी दूसरे महायुद्ध में उसकी सारे उद्योग एटम बम से बेचिरा हुए थे। 2 बड़े शहर ध्वस्त हो गए पूरे। अमेरिका के वर्चस्व में कुछ साल चलना पड़ा आगे। फिर भी आज जापानी कुछ काल तो देश के दुनिया के बाजारों का राजा बना था और आज एक प्रगत राष्ट्र है। चीन को तो हम देख ही रहे हैं। 48 का जो चीन था, कितना बड़ा विस्तार उसने अपने भूमि का कर लिया, कितना बड़ा उसका आर्थिक सामर्थ्य है। मिलिट्री से हमसे शत्रुता करता है, लेकिन है तो बड़ा, कुछ तो परिश्रम किया ही है। हम 75 साल में वैसा क्यों नहीं कर पाए? हमने कहीं कम किया ऐसा नहीं है। हम भी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़ेंगे और हम अपना उदाहरण स्थापित करेंगे दुनिया में, बात पक्की है। लेकिन कैसा करेंगे? अभी तक जैसा किया, हमको अपनी चाल बदलनी पड़ेगी, हमको गति बढ़ानी पड़ेगी। वो कैसे होगा? हमारे स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपने सर्वस्व का होम कर दिया, अपने स्वार्थ की होली जला दी, त्याग किया, बलिदान किया, और ऐसा करने के बाद भी मन से वो किसी के दुश्मन नहीं बने। विश्व बंधुत्व का हमारा जो स्वभाव है, उसको बिना छोड़े उन्होंने ये सब किया। उसी प्रकार, उसी त्याग बलिदान बंधुत्व की भावना के आधार पर, उसी प्रकार का पुरुषार्थ पराक्रम दिखाते हुए, अपने स्व का विवेक रखते हुए, हम सब लोग विविधता भरे इस देश के सब भाषा भाषी, सब प्रांतों के, सब जाति वर्गों के, सब पंथों उपासनाओं के लोग मिलकर वैसा चलेंगे तो हम अपने देश को विश्वगुरु बनाएंगे। और फिर से, बहुत दूर नहीं, लेकिन ऐसा हम करेंगे तो अपने स्वतंत्रता का 125 वर्ष, उस समय जब हमारे इन पूर्वजों की हम फिर से याद करेंगे,
बड़े पैमाने पर। याद तो हमको प्रतिक्षण करना चाहिए, एक क्षण भी उनको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन समारंभ पूर्वक सव्य में याद करेंगे, तब हम उनके स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करेंगे, अपनी श्रद्धांजलि देंगे और मन में ही मन अपने पूर्वजों को नम्र निवेदन करेंगे कि हे महापुरुष, आपके त्याग पर हमारा जीवन खड़ा हुआ, उस जीवन को हमारे त्याग पुरुषार्थ से हमने आपका नाम सारी दुनिया लेगी, इतना समर्थ देश भारत को बनाकर हमने खड़ा किया है। कृपया आप आइए और ये हमारी वास्तविक श्रद्धांजलि स्वीकार कीजिए। ऐसा हम आह्वान कर सकेंगे। ऐसा संकल्प लेके आज से हमको आगे चलना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। उसकी प्रेरणा देने वाला ये पुस्तक बना है। मैं ये पुस्तक बनाने वालों का अभिनंदन करता हूं। उन हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। पूरी तो अभी भी नहीं हुई, लेकिन जितनी उन्होंने खोज कर निकाली है, वो भी हमारे सामने उनके जीवन की कल्पना देने के लिए पर्याप्त जानकारी। इसके लिए उन्होंने परिश्रम किया है, बहुत अच्छा रिसर्च किया है, वेल डॉक्यूमेंटेड बातें हैं। कुछ अपेक्षा भी व्यक्त की है। वो सामान्य अपेक्षा है तो सरकार से है, और सरकार ने एक दो काम उसमें से कर दिए है। केंद्र सरकार ने अंडमान में वो माउंट हैरियट का नाम भी बदल लिया है, मणिपुर के नाम पर किया है, उस युद्ध के स्मरण में, युद्ध के शहीदों के स्मरण में। वो काम सरकार करेगी, धीरे धीरे होगी। सरकार हमेशा धीरे चलती है, वो जल्दी चल ही नहीं सकती। लेकिन समाज को जो करना है वो समाज कर सके, इतनी प्रेरणा इस पुस्तक से जरूर मिलती है। मैं अनुरोध करूंगा, ये अंग्रेजी में छपा है क्योंकि रिसर्च है, आजकल सारा एकेडमिक हमारा डिस्कोर्स अंग्रेजी में ज़्यादा चलता है, लेकिन इसको मणिपुरी में भाषांतर करना चाहिए और इसको हिंदी में भी भाषांतरित करना चाहिए। अंग्रेजी है, मणिपुरी है, हिंदी है, तो ये इंफॉर्मेशन सारे भारत में जाएगी। ये इंफॉर्मेशन मणिपुर में भी जाएगी, मणिपुर की युवा पीढ़ी को नए पुरुषार्थ की प्रेरणा देगी। सारे भारत में ये जाएगी तो भारत के लोग जानेंगे कि परंपरा से हमारा एक अंग, हमारा ही एक भाई, आकार में छोटा है, साधनों में कम है, लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई के योगदान में उसका योगदान कम नहीं है, हमारे बराबरी का है। एक दूसरे के बारे में ये जानकारी होने की आवश्यकता है, और इसलिए मेरा ये आह्वान है कि इसका मणिपुरी में भाषांतर हो। अंग्रेजी में ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं होता, कुछ वहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह भी आपको मिलेगी पुस्तक में, लेकिन पुस्तक का भाव तो एकदम ठीक आता है। उसके अंग्रेजी में करेक्शन की ज़रूरत है, परंतु अंग्रेजी छोड़ दीजिए ना, अपना सामान्य आदमी यहाँ मणिपुरी पढ़ेगा, बोलेगा, समझेगा। भारतवर्ष में दक्षिण के राज्यों में अंग्रेजी काम आ जाएगा, और बाकी राज्यों में हिंदी में सामान्य आदमी समझता है। तो ये जानकारी सर्वदूर जाए, मणिपुर का कंट्रीब्यूशन क्या है भारत की स्वतंत्रता में, ये जानकारी मणिपुर की मिले कि भारत की स्वतंत्रता में कैसा त्याग बलिदान हमारे पूर्वजों ने किया, और एक नया पुरुषार्थ हमारे इस क्षेत्र में खड़ा हो, जो आने वाले भारतवर्ष, विश्वगुरु भारतवर्ष के परम वैभव में भी यह दावा कर सकेगा कि सारे पुरुषार्थ में जैसा पहले से महाभारत काल से भारत के जीवन में मणिपुर का योगदान रहा है, वैसा ही योगदान आज की पीढ़ी भी करती है। एक देश के हम सब अंग अपना अपना योगदान करके पूरे देह को पुष्ट बना रहे, पूरे देह के साथ उसका प्रत्येक अंग भी पुष्ट हो रहा है। ऐसा एक समग्र भारतवर्ष का उत्थान हमारे कर्तृत्व से हम प्राप्त करें, ऐसी प्रेरणा इस पुस्तक में है। इस पुस्तक के लेखक और प्रकाशकों का मैं फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ। यहाँ जो और हमारे शहीदों के, वीर पुरुषों के जो वंशधर लोग यहाँ बैठे हैं, उनको श्रद्धापूर्वक विनम्र वंदन करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। Thank you, sir.
Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future in building our nation. Now, I request Dr. Pebam Nganthoiba Mangang, Social Development Specialist Mahod, Government of Manipur, and also the visiting professor of Idle Teachers Training Academy, Imphal West, is to propose the vote of thanks. Good evening to one and all gathered here. On this wonderful evening, on behalf of the International Forum of Northeast Manipur, I would like to present a vote of thanks. I'm really privileged to get this opportunity to thank Param Pujaniya Dr. Mohanji Bhagwat, Sarsanghchalak Rashtriya Swayamsevak Sangha, who is spared from his busy schedule and having with us, sparing his valuable time. Sir, Dr. Mohanji, it is a very rare opportunity for us to hear your thoughts, and we are really inspired by your valuable words, and we'll carry forward in our future endeavors, and we'll cultivate your minds, our freedom fighters, those who have sacrificed for our motherland. Thank you so much. We are extremely thankful to the Honorable Member of Parliament, Maharaja Laishemasana Jauba, for honoring us by gracing as President on this occasion. Sir, we have no words to offer gratitude for your valuable presence in today's function. I also extend my sincere thanks to the descendants of the Unsung Anglo-Manipuri heroes at Kalapani. Your presence with us in this occasion, we value your time, and without your presence, we won't be able to make this event successful. I also thank to the National Book Trust, New Delhi Government of India, for taking the hardship and publishing this book. I also extend our gratitude to our mentors and friends who supported us and guided us to bringing out this book. Lastly but not the least, I express my warm gratitude to all the volunteers who have supported us to organize this function successfully. Thank you all once again. Thank you. I also extend a really hearty thanks to our Chief Guest and President who spared time from their busiest schedule to grace the occasion. Thank you everyone. Wishing everyone good health, stay happy, stay safe and take care. Once again, thanking you for making this evening a wonderful event. With the due permission from the President of today's function, we will wind up our today's program here. Thank you all. We will have a group photo session here with the descendants and the distinguished chief guest and president of today's function. Which will be better?